Hello everyone, good morning and welcome to Drishti IAS. So myself, I am Girish Venkatesh and you're joining me live on your Drishti learning app. So welcome all of you to the new journey which we are going to start today. And this journey is with regard to the preparations for your upcoming UGC-NET political science paper, that is paper-2. So you must all be knowing about UGC, and this is a domain subject, that is political science paper, and we all know that this paper this year it had to be on, I guess it's now postponed. Last month it was going to be conducted, but there were certain irregularities and all with regard to that. What happened? The paper is postponed to this month, most probably 28th or 25th to 28th, I guess so. Now we are going to, this is a new batch which we are starting with regard to the UGC-NET preparations. So today it's the first class, and there are few rules for this class. See, all of you have joined this class. Why? The thing is that you all are willing to prepare for UGC-NET. You are all willing to go through the UGC-NET paper, appear for it, and get through that UGC-NET paper. So after getting through the UGC-NET, what you will be, that's the main thing. That's a very big milestone in your career, going through the UGC-NET paper, passing it out, and then going for your further research work and all. But in the entire class which we are going to have with regard to this paper-2 political science, all the classes, one thing you have to do is that you have to write the things which I will be writing on the board. Very few occasions will be there where we'll be using the PPTs, but most of the classes we have in the written format. That is, I'll be explaining things to you and I'll be writing those things in the board out there. So what you people have to do is that you have to copy it down. That means you have to make a separate copy with regard to your political science class, and you have to be sincerely writing the things which I am giving in the class, because those things, it will be, you can say, it will be very useful to you in your preparations. I know all of you must have done your BAs and masters and BAs and all. You must have a lot many books with you with regard to political science. And one thing is also very sure, that we don't have to start from the zero level when it comes to this course, because इस कोर्स में वही लोग आते हैं जो really sincere होते हैं with regard to appearing for the UGC paper. उनका टारगेट क्लियर रहता है, specified रहता है. So I shouldn't say that we'll start from zero from every topic, but yes, it's a course which is going on. And one more thing is very important, is not only that what I teach in the class, that is what is all you have to do. Apart from that, whatever books you have, for example, if we are taking up the chapter or if we are taking up the unit international relations, and we are going into the international relation approaches,
Now, if I start with the realism approach, now not only from one book you should read it, मैं तो आपको एक उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा, what इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म अप्रोच में क्या क्या है और एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, तो करीब 19 से 20 क्वेश्चंस वहां से आते हैं. सो इन दिस वे एवरी यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि वॉट एवर आई विल बी टीचिंग, I have a specified time. I have a limited time with me. आपके पास भी limited time है. But my limited time is that in each class I have to give a 2-hour lecture to you. 2-hour class है. So in that 2-hour class I have a portion prepared that हाँ भाई ये पढ़ाना है मुझे आज. For example, I take up realism. So I have to talk this part. Now, whatever I do, it doesn't mean that everything has been fully covered. हाँ, covered पूरा होगा. Everything will be covered. But still, what you have to do is that you have to go through the books with regard to that. Now, for every unit, what I'll do is that I'll give you the names of the books also. ठीक है, फॉर यूनिट 1 and 2 आई विल बी गिविंग यू द नेम्स ऑफ द बुक्स, आप उसको पढ़ सकते हो. यूनिट 2 आई विल बी गिविंग यू द नेम्स ऑफ द बुक, आप उसको पढ़ सकते हो. नाउ पीपल व्हाट दे डू इज दैट दे स्टार्ट अवे फ्रॉम द PYQs. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम PYQs, दे स्टार्ट डूइंग द MCQs एंड ऑल. देखो, इट्स नॉट बेनिफिशियल. व्हाई? बिकॉज अनलेस एंड until you have a knowledge of the topic, there is no use of doing the MCQs straight away. ठीक है? Yes, I'll bring the MCQs here, but when I am bringing the MCQs, I am trying to make you aware that which type of MCQs are going to come. What is the pattern of MCQs? जैसे for example, when it comes to UGC-NET paper, then the common trend is that questions will be based on 5 or 6 things. Number 1, I can say that it will be a subjective statement analysis question. Subjective statement analysis question means you have to judge that which of the sentences are right or wrong, or whether it's a assertion reasoning part. Then one more is with regard to who said what. This is also a common question which is found in UGC papers. Who said what? One of the statement will be given with regard to Plato or Aristotle or Machiavelli or someone else. And it's not that only from unit 1 and 2 the statements will be given. It can be from the political institutions unit also. It can be from any of the units. I'm telling. These are the general trends which are going on. So, with regard to that, what I'm telling is that for every unit, I'll be giving you the names of the books. So, apart from the classes, you have to go through the books. Now, when you will go through the books, then comes the doubts. Now, that is the most important part of all the preparation. Unless and until there is a doubt in your mind, it means that your preparations are going on, but it's not going on in that, you can say, in-depth manner in which it should go on. देखो, जब कभी तैयारियां होती हैं, जब कभी हम तैयारी करते हैं किसी एग्जामिनेशन का, तो हमारे माइंड्स में डाउट्स आते हैं टॉपिक्स को रिलेटेड. एंड व्हेन दोस डाउट कम्स, देन वी हैव टू क्लैरिफाई इट विथ whosoever is teaching us. It's not that you just go to the internet, Google it और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करो.
आजकल एक कॉमन ट्रेंड हो गया है कि गूगल करो और अपने ये क्या बोलते हैं, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर दो. So don't believe in that Google Baba rather than believe in us. Because we are here for you people only. ये जो कोर्स चल रहा है, this is on the Drishti platform. And Drishti platform is, you can say it's a renowned, it's a trustworthy platform for all the competitive exams. So we as a faculty of this Drishti platform, we are here for you people. We are always here for the clearance of all the doubts which you have in your mind. So the first aspect I said was that you have to write things. ये मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं for preparations. The second aspect is that apart from writing the notes which I am giving, I can dictate to you also. But dictate karne mein there is a problem. I have faced that problem. What happens is that when you are dictating, lot many students don't understand a particular word. Yeah, though they are not that speed in writing the things. So instead of dictating, 99% what I do is that I write it on the board. That's better for you. ठीक है? तो आप जब उसको लिख लोगे, then what you have to do is that you have to, that particular day only, you have to take out that book and you have to start reading from that book. जैसे for example, मैंने लिबर्टी पढ़ाया. Then take out the book which I have suggested you, or whatever book which you have from your bachelor's and master's. Take out that book. आपने बैचलर्स और मास्टर्स में भी तो नोट्स बनाए होंगे. टेक आउट दैट ऑल. वो अब काम आएगा. ठीक है, बोला जाता है ना, ओल्ड इज गोल्ड. वो अब काम आएगा आपका बैचलर्स और मास्टर्स के जो नोट्स हैं. टेक आउट दोज नोट्स, कीप इट इन फ्रंट. मेरा भी आप रखो एंड रीड इट. व्हाट विल हैपन? द फर्स्ट स्ट्रोक विल बी द हार्डेस्ट स्ट्रोक एंड इट विल बी वेल प्रिपेयर्ड. बोला जाता है ना, पहला हथौड़ा जब मारा जाता है कील पे तो उसको बहुत जोर से मारा जाता है और तरीके से मारा जाता है ताकि वो अंदर चले जाए. और जब वो थोड़ा सा अंदर चले जाता है उसके बाद बिना हाथ पकड़े भी वो मारते रहता है उसको. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. What I am trying to say is that when I am starting with a topic, for example, liberty, whatever I have taught you in the first class, at least that much you prepare it. Now from that you will get a doubt. Now when you get a doubt, then for that, how can you clear your doubt? Now that's a question which must be arising in your mind. For that, Drishti IAS, or you can say that the Drishti platform, it has a live chat which goes on. Right now, there is certain upgradation going on with our entire, you can say, tech team. पूरा tech के तरफ से पूरा upgradation चल रहा है with regard to the site, with regard to the app and all. So after few days, you can have the facility of live chat. That means whenever the class is going on, I'll have a tab in front of me and you all will be there. Those who are attending the class, they will be there. They can write whatever doubts they have. For example, मैं पढ़ा रहा हूँ John Rawls और आपको उसका एक दो लाइन नहीं समझ में आया, you can say, sir, what was that which we were explaining, or please explain us from the beginning. ठीक है? So the second aspect is that you have to write it. You have to read it from whatever books you have from the master's and the bachelor times. जो भी आपके पास books हैं वो उसको लेकर पढ़ो. और फिर जो चीज आपको लगता है is missing there, you have to write it down. And one thing with regard to the preparation part, अब देखो सुनो, we are having an orientation class. I'm not going to I'm not going to teach you something very new today. Yes, from tomorrow we are going to start with the units.
But today it's an orientation class. अब बात यहां पे आता है कि when there is a doubt, you write it. ठीक है. Now what happens is that हो सकता है there are important one or two important things which I must not have said. Yeah, I must not have written it on the board. So what you do is that you write it. That means after every topic, you must leave some space for your self analysis about that topic, and whatever self analysis, self reading, self preparation you are doing, from that whatever new points you get, you should write it down. खुद का मेहनत करोगे वही सबसे ज्यादा सफलता का सबसे बड़ा राज है. हम तो मेहनत करेंगे ही यहां पे, बट आपका भी मेहनत होना चाहिए. इफ आई एम डूइंग 90% देन यू शुड डू 99%. ठीक है. सो दैट इज व्हाट. देन द थर्ड एस्पेक्ट which I always tell to everyone is that it's very important that you should know the format of questions. That is, आप ऐसा तो नहीं है कि you are not aware of political science. You are not aware of a question. If liberty comes, you don't know from which part is liberty. Or if constitutionalism comes, you don't know from which part is constitutionalism. ठीक है. If ASEAN word comes, you don't know from which part it is. You all are aware of that. So what we have to do is that we have to also take one day and we have to see the PYQs. सिर्फ देखना है, एनालाइज करना है कि ओके, in 2023, out of the 100 questions, how many questions were there with regard to IR? How many questions were there with regard to PERBAD? How many questions were there with regard to the first two units? How many questions were there with regard to the 7th unit or comparative politics unit? How many? So that you have to look at. वो तो हम भी आपको बताते रहेंगे, बट आपको भी सेल्फ एनालिसिस करना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आफ्टर एवरी 15 days यू हैव टू सी द सिलेबस. लोग बोलते हैं एक बार सिलेबस देख लो बहुत है. नहीं भैया, आफ्टर एवरी 15 days. टू बी ऑनेस्ट, ये आपको इलॉजिकल लग रहा होगा, बट द फर्स्ट step towards success in this exam is to that you have to get that syllabus into your mind, because the examiner will not give you anything beyond that syllabus. So you have to prepare according to the syllabus itself. It should go inside your mind. आपके दिल में बस जाना चाहिए उस सिलेबस को, तभी जाकर आप चीजों को प्रॉपरली करना स्टार्ट करोगे. Got it? Next thing is that when we are doing the preparation, when I said PYQs देखो, आप क्यों देख रहे हो PYQs? ताकि आप सेल्फ एनालाइज करो कि आउट ऑफ द 10 units, all of you know that there are 10 units. Out of the 10 units, how many units are very, very important? आप 3 लेवल पे बांट दो यूनिट्स को. वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज एंड लेस इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट मींस फ्रॉम दोज यूनिट्स 20+ क्वेश्चंस आर कमिंग, 20-25 क्वेश्चंस फ्रॉम दोज यूनिट्स. और ऐसा यूनिट कौन सा है भाई? वन ऑफ द यूनिट्स आई विल से यू, इट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाला. वेरी गुड यूनिट. ठीक है. And we are going to start from that unit only. Always start from a unit which you are, देखो ऐसा है, we are familiar with everything, but start from a unit from where you can get somewhat boost और कुछ एक ऐसा फीलिंग आया कि हाँ भाई मुझे हो रहा है. ठीक है. So that's a very lengthy unit and you should go with that also. So syllabus self-analysis is very, very important.
PYQ self-analysis is very, very important. I'm not saying you to do the PYQs right from today, but PYQ self-analysis is very important. Then the third one is that we should go with our self-study also from the books. ठीक है? अब आपको लग रहा होगा तो फिर इस कोर्स का मतलब क्या है? इस कोर्स का मतलब यह है कि जो भी टॉपिक्स है उसको आपको एक तरीके से एक बार में ब्रश अप कर रहे हैं, सो दैट इट गेट्स, मतलब फ्रेश अप हो जा रहा है आपके दिमाग में. ओके, अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था. And the very important part is that, जैसे for example, we'll be going with the Western political thinkers, the Indian political thinkers and all. तो सबसे ज्यादा who said what जो है वो Western political thinkers और Indian political thinkers से ही है. अब एरिस्टोटल ने क्या क्या कहा था, you should write it down. प्लेटो ने क्या क्या कहा था, you should write it down. And that should be a separate, you can say, who said what के लिए एक अलग सा सेक्शन रखो अपने कॉपी में कि उसको लिख लो और हर दिन वो जो who said what है उसको देखते रहो. So one day what you will be seeing is that मेरे से ज्यादा अच्छा आपको उस who said what पे आ जाएगा. ठीक है? So today we all know that it's an orientation class, it's an introduction class. And you must be thinking, ki, sir, how we are going to proceed with everything? Then what today I have brought for you is that the entire syllabus discussion will be doing. आज थोड़ा आसान से चलते. Entire syllabus discussion will doing. And I have some MCQs with regard to international relations. मैंने कुछ MCQs इंटरनेशनल रिलेशन से बनाए हैं. मैंने एक ही टॉपिक से बनाया, उसका रीजन है कि I felt that you should know the type of MCQs which are coming. जैसे मैंने आपको बोला ना, subjective statement analysis based MCQs can come. Then who said what type of MCQs can come. Then chronology based, chronology, very, very important. Chronology based MCQs. वो भी आ सकता है. Then also we can say that identification of books. बुक का नाम दे देंगे, मैच द फॉलोइंग हो जाएगा. भाई आइडेंटिफाई करो कौन किसने कौन सा बुक लिखा है और कब लिखा है. तो ये सब चीजें हैं. So today we are going to discuss about the syllabus. As you all know that the syllabus for UGC-NET, and please remember when I am saying UGC-NET, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबसे शेयर करूंगा, and it's my personal experience. Yes, you have bad lucks also, but my personal experience is that whatever is the UGC syllabus, मतलब वो UGC syllabus, it's so vast और in depth है कि if you prepare the UGC syllabus in a proper manner, in a systematic manner, I guess you will be preparing for your other exams also, mainly for your UPSC also. That means in your UPSC, if you have a optional subject of political science and international relations, PSIR, then for that also you can say that these are the topics only which are included there. ठीक है, उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट हो जाएगा, but yes, these are the topics only which are included there. So this is not only a UGC preparation. आप अगर उसको सिर्फ UGC के हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो भी अच्छा है, बट आप ये सोचो आप UGC के लिए अच्छी तरह अगर प्रिपेयर करोगे, इन डेप्थ प्रिपेयर करोगे, सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर करोगे, ठीक है. So this preparation will help you in other exams
other competitive exams also. So उसको बोल सकते हो कि एक प्रिपरेशन से ही बहुत प्रिपरेशन, बहुत एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है आपकी. Now you must be thinking कि भाई the mode of teaching will be what? I said you the mode of teaching is we will write everything, we'll do everything, but the medium of teaching is very important, and that is only English medium. 90% of my lecture will be in English medium. I'll not say that I'll not be using one or two Hindi sentences. आ जाता है एक इफेक्ट लाने के लिए बीच में एक दो चार लाइन हिंदी में बोल देना पड़ता है, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जिनको थोड़े से इंग्लिश हिंदी की चाहत होती है. सो वी हैव टू सी देम ऑल्सो, बट मैक्सिमम द लेक्चर विल बी इन इंग्लिश मीडियम. Okay. Now let's start with the syllabus. We all know that there are 10 units, and I have put it on the board on the screen. Now the screen must be visible to all of you. The unit 1 talks about the political theory concepts. Now when I say unit 1 with regard to political theory concepts, आप सब उसमें देख सकते हो क्या क्या चीज दिया हुआ है. Am I right? You can all see it there. Now the first part is with regard to the concepts. And concepts में क्या क्या है? Okay. Now what are there in these concepts? First one, you can see that we have liberty. Then we have equality also. Okay. Then justice, rights, democracy, power and citizenship. अब पता है what happens is that whenever we go to the unit 1, now in this unit 1 there are two sections. This is the first section and this is the second section. Now first and second section, they both are interrelated to each other. I can say you that. That means when we are talking about unit 1, तो हमें क्या करना चाहिए? यूनिट 1 और यूनिट 2 को साथ करना चाहिए. इट शुड नॉट बी डन सब, मतलब when I say either you do unit 2 first or you do unit 1 first, but as you do unit 1, then after that it should be मतलब followed by unit 2. ठीक है? What I'm saying समझ में आ रहा है सबको? तो after unit 1 it should be followed by what? Unit 2. Now when I say unit 1, तो यूनिट 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो देखा गया है, इट्स लिबर्टी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी एंड राइट्स. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. लिबर्टी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, राइट्स, ये सब में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर दिस यूनिट 1 एंड दिस यूनिट 2 किसके बारे में बात कर रहा है? पॉलिटिकल थॉट्स, दैट इज वेस्टर्न एज वेल एज द इंडियन पॉलिटिकल थॉट. नाउ व्हेन आई से पॉलिटिकल थॉट, तो जॉन रॉल्स भी यूनिट 1 में आ जाएगा, कार्ल मार्क्स भी कहीं ना कहीं यूनिट 1 में आ जाएगा, हनान आर्डेंट भी यूनिट 1 में आ जाएगा, मिल भी आ जाएगा, एरिस्टोटल भी, मतलब मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कहीं ना कहीं दे विल कम इन यूनिट 1 ऑल्सो. सो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस यूनिट? द बेस्ट वे इज दैट जब भी हम इस यूनिट को करते हैं, देन वी शुड डू इट अंडर 4 हेडिंग्स.
चार हेडिंग्स में हमें करना चाहिए. One is with regard to what, like what is liberty. ठीक है, one is with regard to what. The second one is with regard to when. The third one is with regard to how. The fourth one is with regard to why. That means this unit, it should be studied in the format of what, how, when, why. What, how, when, why के हिसाब से अगर ये पढ़ोगे तो आपको ये यूनिट बहुत आसान नजर आएगा. And apart from that, every concept, it has a criticism. Now that criticism is very, very important. That criticism, it's very important. You should know the criticism with regard to liberty, with regard to equality. सबने अपने अपने theories दिया liberty में, equality में, rights में. But उनके theories पे भी criticism था. Like Plato, he talks about justice. But when he talks about justice, he gives his views of justice. But his views of justice are being criticized. So, on what grounds they are criticized, that you have to know. In the same way, when John Rawls talks about rights, then what type of rights he talks about? What is the criticism to his concept? ये सब चीज हमें पढ़ना चाहिए. That means, apart from what, how, when, why, the criticism part is very important. And apart from the criticism, one more thing you have to do in this unit, that is books and authors. Books and authors. That is unit 1. It's about the concepts and about the political tradition. Tradition in the sense, isms hai isme. ISM, ism. For example, liberalism, conservatism, socialism, Marxism. अब देखो Marxism. जब हम Marxism पढ़ेंगे तो वहां पे कार्ल मार्क्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, ग्रामास्की के बारे में तो पढ़ेंगे ही, when we talk about Marxism. ठीक है, तो यही वो बात है यहां पे. ठीक है, so liberalism, conservatism, socialism, Marxism, feminism, very, very important nowadays, ecologism, multiculturalism, postmodernism. देखो postmodernism सब लोग छोड़ देते हैं, but this is very, very important, this part. लोग liberalism कर लेते हैं, लोग conservatism कर लेते हैं, socialism, Marxism कर लेते हैं, but ये वाला part छोड़ देते हैं. But according to me, these all are very important. Conservatism कहीं पे थोड़ा सा I don't consider much questions coming, but yes, अगर एक दो आ जाता है तो उसको हम ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए. बट जो वेटेज देने वाला चीज है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है. ठीक है, इन द सेम वे लिबर्टी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी. ऐसा नहीं कि आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो थ्रू पावर एंड ऑल, या आई विल नॉट टीच दोस पावर एंड ऑल, बट आवर फोकस मस्ट बी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट PYQs को देखो. और जो भी एग्जामिनर जब पेपर बना रहा है ना, वॉट एवर सेट दे आर मेकिंग, they always keep in mind the syllabus. And one thing very important, I forgot to say you, that our pattern of examination, you all know that it's MCQ format. And when it's MCQ format, so there is a difference between MCQ and subjective. जब हमने पेपर दिया था, that time it was subjective. तो हमारा मोड ऑफ प्रिपरेशन जो था, हमारा स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू शुड डू टुडे. नाउ योर पेपर विल बी एंटायरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड नाउ व्हेन इट इज एंटायरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन थिंग्स बिकम्स मोर व्हाट
complex. Things become, that means MCQ में कहीं से भी कुछ भी ट्विस्ट करके पूछ सकता है. और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो मैच द फॉलोइंग, ये बच्चों वाला मैच द फॉलोइंग नहीं रहेगा. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, देन ओनली आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हो. आपको अवेयर रहना है स्टेटमेंट्स के बारे में. यू हैव टू नो हाउ टू एनालाइज अ स्टेटमेंट. ठीक है. सो दिस सब्जेक्टिव statement analysis, that is also very important part, and for that you have to know the very logic, और तुम्हारे को इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए वो सब टॉपिक्स पे. लेट्स गो टू द सेकेंड यूनिट. नाउ दिस सेकेंड यूनिट, आई सेड यू this first part of the second unit, it's mostly covered in the first unit, है ना. Mostly it's covered in what? It's covered in unit 1. Whether it's Locke, whether it's Hobbes, Machiavelli, Aristotle, Plato. देखो मुझे लगता है ये कन्फ्यूशियस जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बहुत बहुत हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा गया है इस कन्फ्यूशियस. ठीक है. I don't feel that the questions with regard to Confucius is that very important. But yes, now this Hanan Ardent, इनके ऊपर क्वेश्चंस रहता है. ठीक है. Then Mao Zedong, not that much. I don't consider that important Mao Zedong. ठीक है. Then ये सब, और Mary Wollstonecraft, मैरी Wollstonecraft से क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि ओनली यू हैव टू गो टू प्लेटो, एरिस्टोटल, वही पुराना चीजें आपको नहीं जाना है. व्हाट वी डू इज दैट, जो नाम फेमिलियर होता है हम उसी को लेके बैठे रहते हैं कि हाँ जी इसी से क्वेश्चंस आएंगे. नो 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 नो, इट कैन बी, बट कन्फ्यूशियस एंड माओ ज़ेडोंग, I don't feel these two are that very important. और हो सकता है कभी ना कभी किसी टाइम में ये सिलेबस से हट भी जाएगा. ठीक है. So when we are talking about political thoughts, now this political thought chapter, now things can be included or it can be excluded also. मतलब in coming days हो सकता है आपका सिलेबस और जब रिवाइज होगा then वन और टू और थिंकर्स को ये लोग ऐड कर दें, या वन और टू थिंकर्स को यहां से हटा दें. सो टिल नाउ वॉट एवर इज द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन से दैट व्हेन वी आर गोइंग विथ यूनिट 2, ठीक है, जब भी हम यूनिट 2 से चल रहे होते हैं, देन ऑलवेज रिमेंबर आइदर डू द यूनिट 1 इनिशियली एंड देन गो फॉर द यूनिट 2. एंड व्हेन यू आर डूइंग यूनिट 1, फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लो राइट्स किया, तो राइट्स में कौन कौन आ जाता है, किसका किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो जानना है. सो व्हेन वी आर डूइंग राइट्स, then obviously there we will be talking about John Rawls. So when we will do Rawls, then there also we will talk about his ideas of rights. So basically both are what, these both units, they are what, interrelated to each other. So that's why when you are doing unit 1, after that it should be followed by unit 2. ऐसा नहीं कि unit 1 करने के 50 दिन के बाद unit 2 start करो. It should be followed by what? Unit 2. Got it? So this is there with regard to unit 2. So unit 2 में सबसे पहला we have come with this. Then the second one is when we are talking about Western political thinkers, then we have to talk about Indian political thinkers. देखा गया है कि मनु से भी क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, मनु से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2023 में. मनु से भी क्वेश्चंस आए हुए. सो दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, तो यहां से राइट फ्रॉम कौटिल्य टू ऑल. अब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, एशियन पॉलिटिकल थिंकर्स एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स. तो एंशियंट में वी कैन से दैट दीज आर द वंस. ठीक है.
So here we have to do Dharma Shastra, we have to do Kautilya, ठीक है, Barni, Kabir and all, Bal Gangadhar Tilak, Swami Vivekanand, very, very important, at Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Aurobindo, Periyar, Ramaswamy, Muhammad Iqbal, M.N. Roy, he's also very important. Okay. Now this Lohia, Deen Dayal Upadhyay, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर. तो यहां पे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी बहुत सारे हैं. नाउ दिस इज अ सब कंप्लीटली सेपरेट. यू कैन से आप यूनिट 2 में मतलब दिस कम्स अंडर यूनिट 3. ठीक है. सो दिस इज कंप्लीटली सेपरेट. नाउ दिस कैन बी डन अलग से. अब यहां पे भी बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट वर द प्रिंसिपल्स विच वे दे टॉक्ड अबाउट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए होंगे. ठीक है. सो कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स होंगे इनके. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो यहां पे यूनिट 3 इट्स ऑल अबाउट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स. उसको आप एंशियंट और मॉडर्न में आप बांट सकते हो. देन कम्स comparative political analysis, that is CPA. Now here we are coming with the approaches. हम सबको पता है approaches traditional है, modern है. ठीक है. For example, if we are going with regard to the approaches, तो institutional है, political culture है, political economy है, new institutionalism है, comparative methods. So here we have to talk in detail. This is a very, very important, you can say, part of this unit. बहुत important, very, very important part. This one, colonialism and decolonialism. Now here we will be talking about Europe, India and all, Africa and all. So here we are talking about colonialism, where the European powers will be involved. Decolonialism, where we'll be talking about the third world countries, what was the process of that decolonialism and all. ठीक है. So this is the 4th unit, that is comparative political analysis. ठीक है. Comparative political analysis. Okay. Got it. और इसमें the state theory, this is very, very important. State theory. Now under this state theory, we have to cover these topics which are given here. That is the debate over the nature of the state in capitalist and socialist societies. That means what would be the nature of state with regard to the capitalist society, with regard to the socialist society. Now debate over that, the entire debate, that why in capitalist society the nature of state should be such, 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 and why in socialist society the nature of the state should be such, such, such. The entire debate hota hai isme. Then here welfare state is very important, the concept of welfare state. This is also a very important concept which we have to go with. Then we also talk about the political regimes. Now this is a very easy part of this unit when we talk about political regimes. Now these political regimes we have to differentiate and talk, that is democratic and non-democratic regimes. So in democratic regimes, the electoral, the liberal, the majoritarian and the participatory. And non-democratic regimes, it's the patrimonialism, bureaucratic authoritarianism, military dictatorship and totalitarianism and fascist. Very, very easy topic, but you have to do it very properly. मैंने आपको कहा ना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है.
Now here, this one, constitution and constitutionalism. Now here we have to talk about the forms of constitution. अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब बात करना है. एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड दैट टू लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में भी हमें यहां पे जिक्र करना पड़ेगा. ठीक है, एंड हियर देयर इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जहां पे हमें जुडिशियल रिव्यू और वो सब की भी बात करनी पड़ेगी. सो जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी हैव टू टॉक अबाउट. ठीक है, और जब हम लोग लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करेंगे तो उस पे बहुत इन डेप्थ डिटेल में स्टडी करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है. ओके, एंड जब फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे देन देयर इज दैट फ्लेक्सिबल, द रिजिड, देन यू कैन ऑल्सो से मोनार्कियल, रिपब्लिकन, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंटेरियन. ठीक है, सच पॉलिटिकल एंड लीगल. इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे. ठीक है, देन इन डेवलपमेंट पार्ट, नाउ दिस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट आउट हियर. डेवलपमेंट में अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थ्योरी, दिस डिपेंडेंसी वन बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, very important. And then the actors and processes, जहां पे हम लोग electoral system की बात करेंगे. We'll talk about the political party and party system. ठीक है, interest groups क्या होते हैं, social groups क्या होते हैं, social movements. ठीक है, new social movements, मतलब these are the things very very important. NGO से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं. ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पावर, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, नॉट दैट वेरी मच. देन कम्स यूनिट 5, इंटरनेशनल रिलेशंस. आप सबको पता रहना चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. आई सेड यू लाइक 15 प्लस क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस यूनिट, इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस. नाउ फर्स्ट, international relations में what we have to do, we have to study the approaches with regard to international relations, whether it is idealism, whether it is realism. ठीक है, whether it is, you can say, all the various, you can say, approaches, neoliberalism, structural Marxism या constructivism, ये सब very very important है. This is the part. ठीक है, देन वी कैन गो विथ हियर कॉन्सेप्ट में, वी कैन गो विथ द सिक्योरिटी वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एज अ कॉन्सेप्ट. ठीक है, सिक्योरिटी एज अ कॉन्सेप्ट. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस, तो यहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. Then we have to talk about deterrence policy. Deterrence आप सबको पता है. ठीक है, that deterrence we have to talk about. And when we are talking about conflict and peace and weapons of mass destruction, तो यहां पे हम लोगों को वो सब treaty, CTBT and nuclear non-proliferation treaty and all, उन सब चीजों के बारे में भी we have to talk about. ठीक है, CTBT, nuclear non-proliferation treaty, then all the various, you can say, treaties which were there, and Cold War से related भी यहां पे हमें थोड़ा सा बात करना पड़ेगा. ठीक है, then comes the United Nations, nothing to be mentioned here. हम सबको पता है United Nations के बारे में तो पढ़ना ही है.
That is very, very important. We have to go through it. Okay. Okay. So when we are talking about United Nations, then the entire organization with regard to United Nations, we have to talk about its aim, objective, structure and everything. तो यूनाइटेड नेशंस आपके लिए कोई नया चीज नहीं है. प्लस हियर पॉलिटिकल इकोनॉमी, here we'll be talking about the North-South dialogue, the WTO, G20, BRICS, the globalization, या global governance we'll be talking about. Then regional organizations also are there, like European Union, African Union. Now here, when we are talking about all these regional organizations, तो इनके dates, इनके what to say, agreements which are being done, या what are the important policies which they have come up with, तो ये सब चीज इनका बहुत बहुत important है. Who are the countries who are involved? Then very, very important are the treaties which they have signed together and all. ठीक है, तो ये चीज है. जैसे यूरोपियन यूनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन यूनियन, शंघाई, देखो हर चीज को करना है इसमें. एंड चैलेंजेस में आई विल टेल यू, ह्यूमन राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स. टेररिज्म जो हम लोग कवर करेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट कंसर्न्स, ये सब प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेटेड है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज विथ रिगार्ड टू द इंटरनेशनल वन. ठीक है, देन रेफ्यूज प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. ओके, सो दिस इज द यूनिट 5. So unit 5 is all with regard to what? International relations. And this is the unit which we are going to start from tomorrow. So I have already said you in advance that which is the unit we are going to start from tomorrow. It's this unit. Jaise for example, we'll start this unit with the approaches. I'll talk about realism, I'll talk about liberalism, I'll talk about neoliberalism, I'll talk about feminism, ठीक है, constructivism, social constructivism, Marxism, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक एक करके. That means it will take one class for one ism. ये भी याद रखना, एक क्लास तो लगेगा ही एक ism के लिए. So we are going to start with this particular international relations from tomorrow. ठीक है, so international relations के लिए हम लोग कल से इस पे स्टार्ट करने वाले हैं. Then let's come to India's foreign policy. Very, very, very important part of this, मतलब entire syllabus, and that too India's foreign policy. तो historical एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को हमें पढ़ना ही है कि पुराने समय से इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, दैट इज प्री कॉलोनियल टाइम से, व्हाट वाज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, देन हाउ डिड इट राइज इन पावर, एमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर, देन व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स. हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द, यू कैन से, बेंचमार्क्स टुवर्ड्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, तो NAM के बारे में पढ़ना है यहां पे. NAM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. NAM प्लस इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी विथ रिगार्ड टू नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एंड ऑल. इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बात करना है. प्लस इंडियाज मेजर रिलेशंस विथ US, रशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो, एक दो अदर कंट्रीज ऑल्सो. प्लस इंडिया का एंगेजमेंट, जैसे हम यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे तो वहीं पे व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल टेल यू विथ रिगार्ड टू इंडियाज एंगेजमेंट विथ यूरोपियन यूनियन, इंडियाज एंगेजमेंट विथ अफ्रीकन यूनियन, इंडियाज एंगेजमेंट विथ एशियान. सो व्हाट विल हैपन इज दैट एक ही चीज में हम लोग दोनों चीज को स्टडी कर लेंगे. सो दिस एस्पेक्ट, these two aspects
we can study, मतलब ये वाला तो नहीं, but this aspect we can study with respect to unit 5 itself. ठीक है, देखो अफ्रीकन यूनियन, सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल दैट इज, और इंडिया का सार्क, गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट, अब तो लुक ईस्ट नहीं रहा, अब तो एक्ट ईस्ट रह गया, ठीक है, सो दैट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके बारे में बात करना है, प्लस वॉट एवर नेगोशिएशंस, अब ये वाला पार्ट, अब देखो when we'll study United Nations, तो ऑब्वियसली इंडिया का रोल, इंडिया का रेलेवेंस यूनाइटेड नेशंस में, इंडिया का कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशंस में ऑब्वियसली पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पहले ही पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी इट अर्लियर ओनली इन यूनिट 5, सो देयर वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस, ठीक है। देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बिकॉज व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज एंड ऑल, तो वहां पे आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, सो देयर विल आल्सो टॉक अबाउट इंडियाज कंट्रीब्यूशन, इंडियाज रोल विथ रिगार्ड टू इंटरनेशनल, तो ये भी वहीं पे आपका चेकअप हो जाएगा। कंटेम्पररी चैलेंजेस, व्हेन आई एम सेइंग कंटेम्पररी चैलेंजेस, तो यहां पे हम लोगों ने कंटेम्पररी चैलेंजेस यहां पे भी पढ़ा है, कहां पे, यूनिट 5 में। नाउ हियर आल्सो द कंटेम्पररी चैलेंजेस आर द सेम थिंग। अब हम यहां के कंटेम्पररी चैलेंजेस एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी के कंटेम्पररी चैलेंजेस को मिक्सअप करें तो द टॉपिक्स आर द सेम। देखो, इंटरनेशनल टेररिज्म इज वन ऑफ द टॉपिक्स, साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द टॉपिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजी, तो ये सब है। कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो नहीं है, जैसे वाटर रिसोर्सेस वहां पे नहीं है, साइबर सिक्योरिटी आई डोंट गेस इट्स देयर इन देयर, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट देयर, ठीक है, वाटर रिसोर्स इज नॉट देयर। तो यहां पे जब हम लोग इंटरनेशनल टेररिज्म पढ़ेंगे तो यहां पे भी we'll talk about India. So what will happen is that when we'll move into unit 6 और जब इंटरनेशनल टेररिज्म with relation to India आएगा तो हम लोग ऑलरेडी उसको सम अप कर दिए होंगे। तो मेरा आपको ये पूरा सिलेबस डिस्कस करने का मेन मकसद ये है, आई नो यू हैव द सिलेबस विथ यू, आप जब एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है, यू पीपल विल हैव द सिलेबस विथ यू, बट द डिस्कशन विथ रिगार्ड टू द सिलेबस इज दैट which part in combine we can study, which part how we have to study. I could have started with unit 1, but why did I chose unit 5 as such? Because it's a unit which has some interest, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है जहां पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। यूनिट 1 में मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग हर समय एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यू मस्ट बी मतलब गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट, ठीक है, लिबरलिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ऑल, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला चीज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। देन द वेरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। नाउ दिस वेरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई सेड यू ना, आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशंस कर सकते हो। Now when we'll do this political institutions in India, there you are going with the polity part. You're preparing the polity part, the entire polity part, that is the historical development of the constitution, that is the we will start with regard to the acts, the rules which were made by the company, the rules which were made by the crown. From there we will start and we'll continue with the constituent assembly and then we'll move forward, ठीक है, constitution का बनना हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद देन वी विल मूव इनटू द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सिटीजनशिप के ऊपर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये सारा कुछ यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पे कॉलोनियल हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट मेकिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही वाला बात हो गया जो मैंने आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पूरा आपको मैंने बात कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स वेट सब इसमें बता देंगे कि कैसे क्या हुआ। देन प्रियम्बल विल बी टॉकिंग अबाउट कि वो जो ये था, द केसेस विथ रिगार्ड टू द प्रियम्बल, दैट वेदर द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट,
ठीक है, तो द बेरुबेरी केस और cases like that. So fundamental rights, part 3 of the Indian Constitution, part 4 directive principles, how directive principles are related to fundamental rights, how fundamental rights are related to. अब यहां पे देखो आपको दिया हुआ नहीं है कि you should go with fundamental duties and all, but I should say that यहाँ पे fundamental duties भी आपको पढ़ना चाहिए. You should also go with fundamental duties also. ठीक है. And then comes constitutionalism in India. देखो constitutionalism, बार बार मैं कह रहा हूं constitutionalism. Constitutionalism is the limited government. That means the government is given power by the constitution, but the government's power is also limited by the constitution. That is basically with reference to constitutionalism. तो यहां पे डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, नेशनल यूनिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस. यहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस इज विद रिगार्ड टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड ऑल. बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट. Now basic structure debate is all with regard to constitutional amendments. Now there were various cases which came up. That means Article 32 क्या बोलता है of the Constitution, that if the government is found violating the fundamental rights, then the people they can approach the Supreme Court and the High Court. ठीक है, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226. सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाई? बिकॉज देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. द सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती केस, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग 1973, दैट वाज अ, यू कैन से, हिस्टोरिकल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है. व्हाई? बिकॉज इट टॉक्ड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड. तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है. Constitutional amendments, I said, you know, this entire part you will be discussing about the polity. ऐसा नहीं कि all the constitutional amendments will be doing. The important constitutional amendments will be doing, but before that, how the constitutional amendment can take place, that is by simple majority, by special majority, rectified by the state legislatures. ठीक है, तो वो सब चीजें हमने इसमें करना है. देन यस, यूनियन एग्जीक्यूटिव, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनियन एग्जीक्यूटिव में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट के पावर्स, प्रेसिडेंट का सारा कुछ, ऑल द आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग वी हैव टू टॉक अबाउट. ठीक है. इन द सेम वे यूनियन पार्लियामेंट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज द स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शनिंग पार्लियामेंट्री, जुडिशरी. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. देखो, फेडरलिज्म इन इंडिया, यहां पे फेडरलिज्म इन इंडिया में यू हैव टू टॉक अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशन. ठीक है, जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे. इलेक्शन कमीशन, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, यहां पे पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, दैट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. पंचायती राज सिस्टम आपको बताना पड़ेगा, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में बताना पड़ेगा, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए फ्रॉम 1992-3 ऑनवर्ड्स. ठीक है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारे चीज हमने डिस्कस करने हैं. ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू व्हाट? This is with regard to political institution. Now I said you this political institution part, that is unit 7, that is also very very important part. Next part, unit 8, it's also related to your India, that is political process in India. So when I say political process, yahan pe the entire planning process, matlab right from the time of independence, what was the you can say planning format which is being adopted, then the coming of LPG and all, new economic policy and all. Then we will be talking about the implications of that new economic policy, whether it was good or bad, social and economic implications की भी बात करेंगे. प्लस इंडिया का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें द रोल ऑफ रिलीजियन, ट्राइब, कास्ट,
region and language we will be talking about. What is the role of social movements, civil society groups? ये तीनों बहुत बहुत important है when we are talking about this political process in India. These three subheads, they are very, very, very important. Remember that. ठीक है? Then these are the other words, but this is very important. Gender and politics in India. So national parties, state parties कौन कौन से हैं? What are their मतलब what are their ideologies? नेशनल पार्टी कब फॉर्म हो सकता है, स्टेट पार्टी कब फॉर्म हो सकता है, उनके आइडियोलॉजीज क्या क्या हैं, वो सब के बारे में. ठीक है, तो दिस इज ऑल देयर. एंड then comes the public administration part. That is the 9th and the 10th part. It's related to public administration and governance. Now in this public administration, again we have to start with the approaches to public administration. ठीक है, इसमें भी हमारे को पूरे approaches पढ़ने हैं to public administration. ठीक है, then how did this public administration as a it evolved. ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. अप्रोचेस तो मैंने आपको बोला ही, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन देयर आर थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि टेलर ने दिया था. मतलब बेसिकली हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. वन इज द क्लासिकल, the other one is the neoclassical, and the third one will be the modern. Classical में scientific आ जाएगा. ठीक है, the scientific management theory will come up. Now this scientific management theory, then we'll also talk about Fayol. इसमें Fayol भी बात करेंगे हम लोग. टेलर की बात है, वहां Fayol का आपको दिया हुआ नहीं है, but we'll be talking about Fayol also. ठीक है, उर्विक एंड गुलिक की भी बात करेंगे हम लोग. ठीक है, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉडर्न पॉलिटिकल या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. और उस मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये सारा बहुत अच्छा चीज है. एंड हियर कम्स द human relations and all bureaucratic theory. Max Weber का this bureaucratic theory, very very important for UGC-NET. Max Weber's bureaucratic theory. ठीक है, बहुत important है Max Weber का. Then something about leadership and motivation. ठीक है, then विथ रिगार्ड टू कम्युनिकेशन 2 लोगों का पढ़ना है. चेस्टर बर्नार्ड प्रिंसिपल के बारे में भी, और थोड़ा कम्युनिकेशन को इन डेप्थ से पढ़ेंगे यहाँ पे. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, सो और लास्ट इज गवर्नेंस. गवर्नेंस में व्हाट विल डू इज दैट, आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख रहे हो, but we'll start with the entire concept of governance, the features or the principles which governance has, like for example accountability, ठीक है, and all the principle transparency and all. और governance का क्या रोल है, ठीक है, governance का क्या रोल है, and what are the various ways in which the governance have been done, good governance का. जैसे चार्टर, सिटीजन्स चार्टर लेके आया गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लेके आया गया, लोकपाल. ठीक है, ऑम्बड्समैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और इसमें भी वो पूरा प्लानिंग, डिसेंट्रलाइजेशन. अब यहां पे देखो नीति आयोग, इसके बारे में भी पढ़ना है. पंचायती राज फिर से आ गया, देखो वहां का चीज यहां पे फिर से आ गया. दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था यूनिट 7 में, यहां पे भी आ गया. यूनिट 7 में हम लोग कहीं ना कहीं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी पढ़ रहे थे. इट हैज कम हियर ऑल्सो. सो वी कैन इंटर रिलेट थिंग्स फ्रॉम हियर टू देयर. ठीक है,
Okay, so this is what is the syllabus, and the entire syllabus it's distributed among 10 units. 10 यूनिट है आपके सिलेबस में, आप सबको पता भी रहना चाहिए, ठीक है. नाउ इन दैट 10 यूनिट्स यू कैन सी दैट कौन से यूनिट में कौन कौन से है. सो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द इंटरनेशनल रिलेशंस. आई डिड से यू, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इट्स यूनिट 5. So this is the unit which we are going to start with, international relations. अब थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें, अगर हम थोड़ा सा इन क्रक्स पे बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस, then in realism, like for example when we'll talk about the various approaches, so first we'll talk about realism, and in realism we'll talk about Morgenthau, Hans Morgenthau के बारे में बात करेंगे. Now and we all know that the realism part of this international relations, its focus was on what? Its focus was on power politics as well as national interest. That means realism में जो भी focus था, it was on power politics as well as national interest. That means it was a state centric approach. ये एक state centric approach है, and the states they are the primary actors. मतलब इस realism में the states they are the primary actors in the competitive international system. जो भी international system है उसको competitive बोला गया है. Why competitive? Because in realism there is a power struggle. हमने बोला ना कि there is a power politics. So when there is a power politics, then there is a power struggle. And whenever there is a power struggle, so we can say that there is international, you can say that there is competitive system out there. So realism में we'll talk about Morgenthau and उससे भी related और बहुत सारी बात करेंगे. Then comes liberalism. लिबरलिज्म का दूसरा नाम है आइडियलिज्म. ठीक है. नाउ दिस आइडियलिज्म इज ऑल्सो रेफर्ड एज व्हाट? लिबरलिज्म. नाउ इन दिस आइडियलिज्म, जैसे कि रियलिज्म में मेन फोकस क्या था? इन रियलिज्म द मेन फोकस वाज पावर पॉलिटिक्स एज वेल एज नेशनल इंटरेस्ट. बट इन रियलिज्म the main focus is not power politics and national interest. Rather, the main focus is what? Cooperation. The main focus is on international institutions like the United Nations and all, and also the spread of democracy. So यहाँ पे idealism में we will be focusing on its principles and all. मतलब अब idealism में हम सबको पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने रोल प्ले किया तो it was Immanuel Kant. अदर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, बट इमैनुअल कांत के बारे में विल टॉक अबाउट. सो व्हाट इज द आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? तो उसमें we all know that idealism, it focused on cooperation, it focused on international institutions, it focused on the spread of democracy. That means it's not a state centric approach, rather it wants reduction of conflict so that there is peace in international relations. तो ये peace पे believe करता है. It believes in the potential of progress and all. ठीक है. तो ये वहां का है. Then after that we can talk about social constructivism. ठीक है. Social constructivism यहाँ पे main role is Alexander Wendt. ठीक है. His main role Wendt, Alexander Wendt. और social constructivism में what is there? The focus is on how international politics are to be shaped. मतलब how international politics are shaped by social political factors. कि जो भी social political factors है वो international politics को कैसे shape कर रहा है. And how is it forming a common identity?
उसके बारे में बात करना है यहां पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में. देन हियर मार्क्सिज्म इज ऑल्सो देयर, दैट टू स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म. ठीक है. सो इन मार्क्सिज्म वी ऑल नो कार्ल मार्क्स. ठीक है. एंड व्हाट वर हिज व्यूज विथ रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, हम सबको पता है. ही वॉज एंटी कैपिटलिज्म, ही वॉज प्रो सोशलिज्म. So he's talking about a classless society. Classless society कैसे क्रिएट होगा? तो अब जब हम यहां पे बात करेंगे देन थोड़ा सा ना थोड़ा कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स की भी यहां पे विल बी टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन विच इज डन बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, विच इज डन बाय द यू कैन से बॉर्जियो क्लास. तो यहां पे दो ही क्लास है, बॉर्जियो और प्रोलेटेरिएट. सो इंटरनेशनल रिलेशंस उनका क्या रोल था वो चीज हम बात करेंगे. देन वी कैन ऑल्सो कम टू फेमिनिज्म, है ना. फेमिनिज्म में भी हम बात करेंगे. फेमिनिज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फेमिनिज्म में सिंथिया यू कैन से इन लो, उसकी बात है यहां पे. और फेमिनिज्म में इट्स द फोकस, मतलब focus is on the importance of gender with regard to international relations. What is the importance of gender in international relations? Our gender may be, the basic criticism is with regard to the male domination in the previous, you can say in the traditional theories of international relations, male domination. तो यहां पे role of women की बात होगी. ठीक है. उसी तरह we can also talk about neo-realism. Neo-realism यहां दिया हुआ है कहीं नहीं, but yes we have to talk. yes, हाँ वहां पे neo-realism, neo-liberalism, that is neo-idealism, post-modernism, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. चलो, for you I have brought some MCQs which I have to discuss. ठीक है. Just a taste of what is going to come in your exams. You should have that taste कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स में ये सब चीजें आएगा. ठीक है. Now, when I say who among the following gave the 6 principles of realism, अब रियलिज्म का 6 प्रिंसिपल्स किसने दिया? देयर आर 4 ऑप्शंस, मियशमर, मॉर्गेंथ्यू, E.H. कार एंड केनेथ वॉल्ट्स. अब हम सबको पता है व्हेन इट कम्स टू रियलिज्म देन मॉर्गेंथ्यू इज द वन हु गेव द 6 प्रिंसिपल्स, है ना. मॉर्गेंथ्यू ने ही 6 प्रिंसिपल्स तुम्हारा दिए थे. गॉट इट. सो हियर कम्स द आंसर मॉर्गेंथ्यू. सो ये है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. वन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई सेड यू ना, मैंने अभी तुमको क्या बोला था? द क्वेश्चन इज हु सेड व्हाट. ये वो क्वेश्चन है. ठीक है. देन मैच द फॉलोइंग. देखो अभी यहां पे दिस इज द मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग इज विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टिवली मैच्ड. कौन सा करेक्टिवली मैच्ड है? के वॉल्ट्स, ऑफेंसिव रियलिज्म. हंस मॉर्गेंथ्यू, न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म. जॉन मर्शमर, डिफेंसिव लिबरलिज्म. नाउ कैन यू से कौन तुम्हारा क्लियरली एकदम अच्छी तरह मैच्ड है? नाउ हियर यू मस्ट, नाउ अब यहां पे क्या आता है? नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा, वॉल्ट्स, नो ही वॉज नॉट रिलेटेड टू दिस. केनेथ वॉल्ट्स, ही वॉज नॉट रिलेटेड टू दिस. ठीक है. ही वॉज समवॉट रिलेटेड टू what to say, constructivism से था. Morgenthau was somewhat related to realism but not neoclassical realism. तो इस तरीके से the answer goes none of the above. तो ये this is also a pattern of question, that is scholars and their theories.
तो मतलब इस पार्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पार्ट में, यू गेट क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू स्कॉलर्स एज वेल एज थ्योरीज. देखो, जब भी हम लोग कभी भी कोई भी यूनिट स्टार्ट करेंगे, बिफोर दैट वी विल ट्राई टू सी 5 to 10 क्वेश्चंस एज टू किस टाइप से क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं, so that we are able to judge out how to do the preparation part. So you should know the scholars and their theories also. That is very very important. Scholars और उनके theories जानना भी बहुत बहुत important है. Next, अब मैंने आपको बोला था theory of deterrence. Now deterrence is what? Deterrence is something which is related to theory of deterrence. Sorry, ये ABCD होगा. A theory of deterrence. Now whenever it is deterrence, then deterrence means what? तुम्हारे पास बंदूक है, मेरे पास बंदूक है, दोनों को हम एक दूसरे को गोली मार सकते हैं, बट व्हाट हैपेंस, जब गोली मारने की बात आएगी तो दोनों पीछे हट जाएंगे. So now theory of deterrence is with relation to what? It's not with relation to balance of power or any other trap or all. It's with relation to what? Nuclear diplomacy. तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चंस यहां पे आते हैं. Then the fourth question, which one of the following are the basic assumption, sorry the spelling is wrong here, is the basic assumption of realism. Basic assumption, अभी आपको मैंने बोला रियलिज्म का मेन फोकस किस पे होता है? पावर पॉलिटिक्स, इन नेशनल इंटरेस्ट, ये सब पे होता है. सो व्हाट इज सोवरेनिटी ऑफ स्टेट्स? नहीं. इंटरनेशनल कॉपरेशन? नो. हेजिमोनी? नो. प्राइमेसी टू द इंटरनेशनल इंटरेस्ट? बताओ कौन कौन सा होगा. अब रियलिज्म स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है, तो इट्स अ स्टेट सेंट्रिक अप्रोच. इट मींस sovereignty of the states is important and national interest. So the answer is what? D, 1 and 4. Let's come to the fifth question. अब मैंने बोला था ना, books and authors बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बुक्स एंड ऑथर मतलब इस यूनिट से भी बुक्स एंड ऑथर आ सकता है. सो द बुक Neo-Colonialism. Now this book Neo-Colonialism, it's written by Habermas, Lenin, Nkrumah or I. Wallerstein. The answer is Nkrumah. This is one of the important books written by him. ठीक है. Then world system theory, मैंने बताया था ना, देखो मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को गोल किया था. ठीक है. स्टेट थ्योरी में से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को आई हैड डन गोल किया था, जैसा जहां पे डेटरेंस था उसी के बाद ये आया था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. नाउ दिस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वाज प्रोफेस्ड बाय रॉबर्ट कॉक्स, आई. वॉलरस्टेन, एंटोनियो ग्राम्स्की और पॉल बरान. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. बताओ भाई. नाउ दिस, अब ये भी तुमको पता रहना चाहिए ना किसने क्या किया. तो इसका आंसर जो है, इट्स व्हाट? इट्स बी. द आंसर इज व्हाट? बी. इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे. नाउ दिस वन, ये देखो. Now this is only what is referred as what? It's referred as statement analysis question. ठीक है. इसी को हम लोग बोलते हैं subjective statement analysis question. अब इसमें कंसिडर करना है following statement about dependency theory. तो poor nations are export destinations for obsolete technology and for market of wealthy nations. Dependency theory was given by Raoul Prebisch. Propounders of this theory are of the opinion that underdeveloped nations must fully integrate with international trade system
to enter self-sustaining development path. अब इसमें बोला है which of the statement is correct. ठीक है, which of the statement it's correct. देखो डिपेंडेंसी थ्योरी में मेरे अनुसार ये दोनों चीज सही है. दैट इज द पुअर नेशंस, ये लोग डेस्टिनेशन होते हैं फॉर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी. मतलब जो भी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है वो वेस्टर्न नेशंस, पुअर नेशंस के पास भेज देते हैं, डेवलप कंट्रीज. प्लस दे आर द मार्केट फॉर वेल्दी नेशंस. और डिपेंडेंसी थ्योरी इट वाज गिवन बाय रॉल पॉस्बिस. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. डिपेंडेंसी थ्योरी. Okay, so this is what is there with regard to your this class. So from tomorrow what we will do is that we'll start the class and we'll start it with unit 5. So I need all of you to go through the approaches, the realism approach, and tomorrow we'll discuss the realism approach. We'll write few important points with regard to the realism approach, and I need all of you to make a copy for that. ठीक है, और आप घर पे भी रियलिज्म अप्रोच को एक बार थोड़ा सा प्लीज पढ़ के रखना. ठीक है, सो काइंडली रिमेंबर दैट यू हैव टू गो थ्रू इट. ठीक है, गॉट इट. Now the material which you can use for international relations. First you can go through the IGNOU material. Now IGNOU का जो मटेरियल होता है उससे आप चल सकते हो इसमें. So start with the IGNOU material first. ठीक है, and whatever book you have, you start with that and go with the realism part, and tomorrow we'll be discussing about that. So hopefully you must have all understood what we all discussed in this orientation class. So nice to have you all in this platform of Drishti Learning app. So from tomorrow we are going to start this journey. We have already started it today, but from tomorrow we'll be starting it in a very systematic, in a constructive manner, and that too with a motive that all of you have to go through that exam which you will be giving in this year. ठीक है, so 2024 में जो आप एग्जाम देने वाले हो वो आपका अच्छी तरह पास आउट हो जाओ, उसके लिए हम लोग वो तैयारियां पूरी अच्छी तरह करेंगे. ठीक है, ओके. सो टुमारो सेम टाइम we are going to start with IR. So all of you please be there. Thank you for today and see you tomorrow. Have a nice day. But don't forget that tomorrow we are starting with realism international approaches. So all of you have to go with that realism. थोड़ा सा नॉलेज आप गेन कर लो अपने खुद के सेल्फ स्टडी से, और जब मैं बोलूंगा तो उससे क्या होगा, वी बोथ विल बी, मतलब एक तरीके से कॉपरेशन रहेगा और आपको और अच्छी तरह से चीजें समझ में आ जाएगी. कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि नया चीज आप सुन रहे हो. ठीक है, थैंक यू.